Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज यानी नया वर्ष आप सभी श्रोताओं के लिए मंगलमय हो। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर टिप्पणी के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Goods and services tax collection for December 2020 hits an all-time high of over 1.15 lakh crore rupees. At the stock market, Sensex rises 118 points to post another record high. Nifty adds 37 points to hit a new peak. And automaker Maruti Suzuki's domestic sales climbed 14.6% in December 2020. Hyundai Motors total sales zoomed 25%. देश में दिसंबर महीने में वस्तु और सेवा कर संग्रह बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 1,15,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नई ऊंचाई पर पहुंचकर हुए बंद। सेंसेक्स 118 अंक उछला, निफ्टी 37 अंक ऊपर आया। और दिसंबर महीने में कार निर्माता मारुति सुजुकी के वाहनों की बिक्री 14.6% बढ़ी। हुंडई मोटर्स की कुल बिक्री में 25% की हुई वृद्धि। In our top story, goods and services tax collections hit a record high of over 1.15 lakh crore rupees in December. In a statement, the Finance Ministry said this is the highest growth in monthly revenues for the last 21 months. This has been due to combined effect of the rapid economic recovery post-pandemic and the nationwide drive against GST evaders and fake bills, along with many systemic changes introduced recently, which have led to improved compliance. During the month, revenues from import of goods were 27% higher than the revenues from domestic transactions, including import of services, are 8% higher than the revenues from these sources during the same month last year. In line with the recent trend of recovery in the GST revenues, a mop-up in December crossed 1 lakh crore rupee mark for the third time month in a row and was 12% higher than over 1.03 lakh crore rupees collected in December 2019. Puneet, once again, a warm welcome to you on the program. Thank you, Arjun. Well, Puneet, the story has read out the reasons why, the rationale in terms of an economic recovery that we have been speaking about in this particular quarter, along with increased compliance that is improving the collection, which has been going in the black before. But the story also states about a rise in the imports of goods, which has gone up by 27%, and an import of services, which has gone up by 8%. What is that indicating in terms of imports? Is that an input for value addition, which is then going into a finished product or a service which is being exported or consumed here? So, Arjun, like the Finance Minister has said, there are many reasons why the GST collections are now at record highs. And this is when the GDP is not galloping. I mean, we are all saying that GDP is likely to be 10% below last year in the current financial year. And in spite of that, if the GST collections are going higher, then you can try to anticipate what could be the reasons behind it. So, of course, there is an issue about better compliances, procedures being made better. The other issues about fake bills was there and have been tackled very effectively lately. But I think the main reason is the fact that the economy itself is doing much better. We see that across the board. We see that in goods, we see that in services. And I think another added reason why collection is going higher, in spite of GDP staying softer, is because of the digitization of the economy. I think that has played extremely important role in better compliances. So more and more businesses are now doing business, conducting their affairs
on digital platforms, and therefore tax collection is automatic, and there is much less evasion of taxes. So all these things have combined. What the message it gives me is that going forward, when the economy next year starts moving back to normalcy, and we expect 10 to 12% growth in GDP next year, then the GST collections could go up significantly higher. We could probably start seeing collections of 1.5 lakhs a month, which is huge, because over a year, that collection could be closer to 20 lakh crores for indirect taxes. And I think that was the whole idea of GST being introduced in 2017, to improve compliances, to collect more taxes, even when the tax levels are not very high. I mean, government has been softening the levels of GST. So I think all these things have combined to give us much better collections this year, and I think it sets the trend for future. पुनीत, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, एक कह लें कि तकनीकी दो शब्द हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी सामान का आयात होता है, यह तो आसानी से समझने वाली बात आम श्रोताओं के लिए है। सेवाओं का आयात क्या है और यह किस रूप में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है? देखिए, हम जो सेवाओं का आयात भी करते हैं ये कई रूप में, बिकॉज कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं और इवन मेडिकल सर्विसेज भी हम इंपोर्ट करते हैं। टेलीकॉम में भी कुछ सर्विसेज हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। खासतौर से आपने देखा होगा कि इस साल यदि आप देखें तो जूम जैसे यूज हुआ, तो इस प्रकार की इवन सॉफ्टवेयर, जैसे जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल की जाती हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं काफी बड़े पैमाने पर। और यदि हम जो देख रहे हैं कि इनका ग्रोथ हुई है, यानी ये जो कंजम्पशन है, मोस्टली दिस विल बी कमिंग फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो वो हम देख रहे हैं कि वहां पर ग्रोथ हुई है। तो एक अच्छी चीज भी है, बिकॉज उसपे जैसे मैंने पहले बताया कि उससे कंप्लायंसेस बेहतर होती हैं, उसकी हम ट्रैकिंग बेटर कर सकते हैं। तो ये सब मिलाकर के कुल मिलाकर काफी अच्छी इसमें ग्रोथ देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि इकोनॉमी में जब भी सर्विसेज में ग्रोथ देखते हैं हम, वहां पर बेटर वैल्यू एडिशन होती है। तो डेफिनेटली आई थिंक दैट अपीयर्स टू बी द रीजन व्हाई दिस हैज हैपेंड। Well, Puneet, I had also asked you the same question earlier. Do you see this figure linking with the GDP figures when they come out? And secondly, the way we're seeing with GST collections going up at a 21-month high, and you are predicting that it can be 1.5 lakh crore rupees in its entirety once the system really takes up. Do you see this as the profitability of companies going up? But what about wages and rents? How do you see that improving in the economy? So, Arjun, two things. One is that you say that GDP numbers, does it tell us that GDP numbers will look better? Definitely, I think. So, estimates of GDP, the earliest estimates had forecast that GDP will probably decline by 11 to 12% in the current financial year. Then those estimates changed to about 9 to 10%. And I think the current estimate is that probably we will, for the full year, we'll see the GDP contract by about 7 to 8%. I think I am in the camp which believes that the final GDP reading will be minus 7 to 8% for the current financial year, largely because the first quarter was very bad. And we will see some modest expansion probably in the third quarter, and then that will pick up pace going forward. So clearly, these GST numbers are hinting that the GDP numbers will again be better than we had expected. Apart from profitability, what about wages and rent? So clearly, I think wages have taken a hit because across sectors, wages have been hit badly in certain sectors. So there are pockets of economy which are still not doing well. It is easy to say that, okay, the GDP is picking up and economy is picking up, but the truth is that within the larger GDP picture, there are sectors of economy like hospitality, hotels, restaurants, airlines. There are certain areas within the economy which have not picked up as well right now. And in those areas, we find that the wages have really taken a hit. In fact, employment has taken a hit. In other sectors also, companies have cut back on employment, not so much on wages. I expect wages to come back to normalcy somewhere in the current calendar year, maybe January, maybe February. But it is the employment figures which are important, and that will come from these areas, no? Tourism, hotels, hospitality, airlines.
these sectors have really lost out in the GDP in the pandemic. So my concern is not so much about the wages which have gone down, because probably that will depend on demand supply of labor, but the sectors where employment has been completely lost, I think those sectors are very important, and once they come back to some kind of normal working, we will probably see an improvement in employment as well as wages. पुनीत, हम आपका ध्यान आकृष्ट एक बार फिर करना चाहेंगे देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पर भी, और उसके साथ जोड़ना चाहेंगे जो ताजा आंकड़े आए हैं 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के यानी कोर सेक्टर के जो आंकड़े आए हैं उनके साथ जोड़ते हुए समझना चाहेंगे कि अक्टूबर महीने में हमने वृद्धि देखी थी कोर सेक्टर के उत्पादन में, नवंबर में फिर उसमें गिरावट हुई और 3 सेक्टर को छोड़ के बाकी कह लेंगे 5 में गिरावट और खासी गिरावट रही। वैसे में क्या हम उम्मीद करें कि जो हमारा यानी वस्तु और सेवा कर संग्रह है वो आने वाले दिनों में इससे प्रभावित होगा? मनोज जी, आपने सही कहा। जो कोर सेक्टर का डेटा आया है नवंबर का, उसमें फिर थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन आया है, 2.3% कॉन्ट्रैक्शन हमने कोर सेक्टर में देखा है। और खासतौर से यदि इस डेटा को देखें हम तो उसमें सीमेंट में काफी गिरावट आई है, स्टील के जो ग्रोथ थी उसमें थोड़ी गिरावट आई है। पर मुझे लगता है कि जो यदि हम उसको 6 महीनों के परिप्रेक्ष्य में देखें कि पिछले 6 महीनों में पर्टिकुलरली सीमेंट, स्टील, इन सेक्टर्स में काफी बढ़त आई थी, तो ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा यहाँ पर मॉडरेशन हुआ है, पर मुझे लगता है कि वो ट्रेंड आगे नहीं चलेगा और वो सिर्फ एक सीजनल करेक्शन है। और उसके बाद अब जो करंट मंथ है, दिसंबर का महीना रहा या जो आगे आने वाले महीने हैं, उसमें हम स्टील में, सीमेंट में दोबारा से पिकअप देखेंगे। गौर करने वाली बात है कि इलेक्ट्रिसिटी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोर सेक्टर का, वहां हम अभी भी ग्रोथ देख रहे हैं। हालांकि नवंबर में भी थोड़ी मॉडरेशन हुई है, बट उम्मीद यह है कि इलेक्ट्रिसिटी में हम देखेंगे आने वाले समय में ग्रोथ रहेगी और वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है वो हमें जोड़ती है। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि जो कोर सेक्टर का जो डेटा है उसका जो असर पड़ता है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें फर्क पड़ता है, क्योंकि कोर सेक्टर की वेटेज रफली 53% है आईआईपी में। और डेफिनेटली हमें आईआईपी के नंबर्स जो हैं वो अभी बहुत अच्छे नहीं लगते। इंडस्ट्री प्रोडक्शन नंबर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव शायद नहीं होंगे। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि फ्लैटिश नंबर होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जीडीपी पिकअप करेगा, सर्विसेज सेक्टर पिकअप करेगी, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो एक्टिविटी है वो और ज्यादा पिकअप करेगी। एंड उसका कुछ हद तक मैं कहूंगा जो इम्पोर्ट्स के नंबर्स हम देख रहे हैं, जो इम्पोर्ट्स अभी बेहतर हुए हैं, उससे हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी। तो हालांकि मैं थोड़ा सा जैसे आपने कहा कुछ डिसअपॉइंटेड हूँ कोर सेक्टर के नंबर्स से, लेकिन मुझे इतनी नाउमीदी नहीं है। मुझे लगता है आने वाले समय में दोज नंबर्स शुड इंप्रूव। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और चलें शेयर बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार। नए वर्ष 2021 के पहले कारोबारी सत्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 118 अंक उछलकर अब तक के नए उच्चतम स्तर 47,869 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 37 अंक यानी 0.3% बढ़कर 14,019 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों की ओर चलें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.2% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.9% की वृद्धि हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange rose 118 points to close the first trading session of the new year at an all-time high of 47,869. Nifty at the National Stock Exchange added 37 points, or 0.3%, to end at a record high of 14,019 points. The broader market outperformed the Sensex, with the BSE Mid-Cap Index advancing 1.2% and the Small Cap Index climbing 0.9%. Market breadth on the BSE was strong, with more than 2 stocks rising for every single loser. Among the sectoral indices on the BSE, the Telecom Index was the leading gainer, climbing 1.4%. Capital Goods Index advanced 1.1%. Tech Index added 1%. IT and the Realty indices rose 0.9% each. Auto and healthcare indices gained 0.8% each. Power and the FMCG index moved up 0.7%. Among declining indices, BankX fell 0.3% and the Consumer Durables Index shed 0.1%. रुपए की स्थिति पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 6 पैसे कमजोर हुआ, 73 रुपए 12 पैसे के स्तर पर आ गया। Puneet, what is the market indicating? A lot of positive sentiment with the new year starting with a bang, 118 points, which does not look
like a great rise if you compare it to the Sensex, which is about to touch 48,000. Do you see a correction round the corner? What is the futures and options market telling you in terms of build-up? This is, if you look at the last week, although for the whole week there was a marginal rise in Sensex, flat, but on a cumulative basis, this was the 9th week in a row when markets have gone up. And this is the longest winning streak for Sensex after April 2010. So after 10 years, this is the first instance when indices, the Sensex, has gone up continuously for 9 weeks. I think that's a great achievement. It tells us how the market is perceiving the economy, how the markets are behaving. So clearly, the markets are in a sweet spot right now. They have been rising consistently, and not only the few stocks which comprise the index. Fortunately, for the last 2-3 months, we have seen the broader market, the small caps, the mid caps, they have gone up a lot. And the retail investors who are mostly invested in these small caps and mid caps, they have gained significantly. I think so. It's overall been very good news for most investors in the stock markets. Having said that, of course, if the markets have run up so much in the last 9 weeks, there's a likelihood that the markets may consolidate or they may fall a little bit in the weeks ahead. My own sense is that the markets will probably weaken a little bit, but not very much. So we could see, a 2%, 3% kind of correction, maybe a couple of 100 points on Nifty, and then the markets will consolidate around that level. Also, we are heading into a very news-heavy period, which is pre-budget markets, And usually this is a time when there are a lot of expectations, a lot of anticipation of what is happening in the budget and what FM is going to do. So clearly, markets are heading into a very active period. The volatility index, the VIX, which tells us where the markets are headed, usually what is the anticipation, that is okay. That is around 20, which is not very, very high, which is not very low. So markets are kind of keeping their fingers crossed. And I think we could see some consolidation, some slight decline in the markets in the weeks ahead. But they seem okay for 9 week, I guess. पुनीत, यदि हम पूरे वर्ष का आकलन करते हुए आने वाले वर्ष के लिए आपसे संभावनाएं समझना चाहें, तो जो बीता वर्ष रहा है कोरोना से प्रभावित यानी वैश्विक दुनिया में, उसमें भारतीय बाजार में पिछले प्रदर्शन को यानी इस वर्ष के प्रदर्शन को देखते हुए अगला वर्ष कौन सा क्षेत्र या कौन-कौन से क्षेत्र चमक बिखेरने वाले रह सकते हैं? तो मनोज जी, आपने जैसे कहा कि जो पिछला वर्ष है, यदि उसको हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो ऐसा लगता है कि ये साल अच्छा रहा, 20% करीब ग्रोथ रही इंडेक्स में और ये अच्छा साल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनली अगर हम उसको देखें तो ये बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव का साल रहा, बहुत ही मिक्स्ड बैग रहा, मिक्स्ड इमोशंस रही, आसान वर्ष नहीं रहा किसी के लिए भी, किसी भी सूरत में। तो डेफिनेटली 2020 से बेहतर 2021 के होने की उम्मीद है। हालांकि हमारा जो मेन और 2020 की जो स्टार्स हैं वो बेसिकली रहे आईटी स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स और कुछ सिलेक्टेड आप कह सकते हैं कि टेलीकॉम स्टॉक्स जिसे कह सकते हैं आप, उस तरह की कंपनियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मेरी उम्मीद है कि जो आने वाला वर्ष है, जो 2021, उस वर्ष में हम जो साइक्लिकल स्टॉक्स हैं, जिसे कहते हैं वैल्यू स्टॉक्स, यानी कमोडिटीज के स्टॉक्स जो रहेंगे या रियल एस्टेट स्टॉक्स, जो कंपनियां अभी भी बहुत मुझे लगता है अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं, और तो मेटल्स हो गए, कमोडिटीज हैं, रियल एस्टेट है, फाइनेंस के स्टॉक्स है, बैंकिंग के स्टॉक्स, और बैंकिंग में मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो काफी ज्यादा वहां पर अभी कोई काफी डिस्काउंट में है शेयर्स और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है उनका। तो मुझे उम्मीद है कि जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे हैं स्टॉक मार्केट के ओवर द लास्ट 2-3 years, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एक वर्ष में हम वहां पर वैल्यू बाइंग देखेंगे और वहां उनकी प्रदर्शन जो है वो बेहतर हो सकता है। Puneet, do you see January as a month for banking and telecom, especially banking? If you look at the performance today, you mentioned about the banking index. It fell marginally, but the PSU bank index that you specifically mentioned went up by 3% in today's trade. And there was a volume spike in specific bank stocks, private and public banking. And in the futures market also, we are seeing a long build-up in specific banking stocks and a short build-up also in banking stocks. So how would you look at the banking sector, not just for
the next week, but for the month itself? So, Arjun, there are many schools of thought when it comes to banking sector. We clearly, operationally, we have seen that the private sector banks have gained significant market share over the public sector banks in the last many years. And these banks have been doing better, although they are smaller banks. We must appreciate that except a couple of top banks like HDFC Bank, ICICI Bank, there are other banks, private sector banks are much smaller than public sector banks, and yet the valuations that they command are very, very high compared with PSU banks. So markets have been favoring private sector banks over the last many years, largely because of the balance sheet issues in PSU banks. My own estimate is that going forward, PSU banks, first of all, they have tackled the NPA problem quite significantly in the last few quarters, and they're likely to do much better. The balance sheets are going to be much better going forward. So there could be a lot of value buying in PSU banking space. It may not be as attractive as private sector banks, which have gone up a lot, but I think that long-term value buyers are going to prefer PSU banks, and that is what we are seeing in the markets. Like you mentioned today, the private sector banks actually today were slightly lower, but the PSU bank stocks went up by more than 3-4% during the day. So to some extent, I would say that is indicative of value buying in these sectors. Overall, if you ask me, if this economy has to do better, if you are looking at India becoming a $5 trillion economy in the next 3-4 years, then there is no way that the financial sector will not participate. My own sense is that financial sector will participate significantly in it. The banks will play a major role, whether they do it through the digital platforms or they do it in the physical market. But after all, it is money, that the money that they can raise and they can lend to businesses. So I think banks and financial sector will play a major role in India's growth going forward. So if you ask me next 2, 3, 4 years, financials appear to be very attractive. Investors should focus on that space, and they should look at attractive value buys. They should not chase momentum, because it is easy to chase momentum, but I think they should look at value buys, and to my mind, PSU banks are looking very attractive in that space right now. Puneet, what about the auto index went up marginally? We also have sales figures of companies. How do you see the prospects for auto sector and its linkage to employment? Briefly. So auto sector is, of course, considered backbone of the economy. It tells us in advance how the economy is doing, and the numbers that we have got are phenomenal. In fact, across the board, most of the companies have reported 20-30% growth in sales, and some of the tractor companies have reported 80% sales, growth in sales. So clearly, the agriculture, the rural economy is doing much better. Commercial economy appears to be doing much better. My own sense is that auto sector is doing very well right now. And auto sector is central to a lot of other industries. It generates employment. It plays very important role in steel sector, in a host of other companies and sectors. So my sense is that the news from the auto sector is really welcome for the entire economy. चर्चा ऑटो सेक्टर की हुई है, तो अपने श्रोताओं को हम ऑटो सेक्टर में जो बिक्री हुई है दिसंबर महीने में उसकी खबर देना चाहेंगे। देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने दिसंबर 2020 में वार्षिक आधार पर घरेलू बाजार में कार की बिक्री 14.6% बढ़ने की खबर दी है। ऑल्टो, एस्प्रेसो जैसी छोटी गाड़ियों की बिक्री 4% बढ़ी, जबकि वैगन आर, स्विफ्ट, सेलेरियो, एग्निस, बलिनो, डिजायर जैसी कॉम्पैक्ट गाड़ियां 18.2% अधिक बिकी हैं। हालांकि सीएस की बिक्री 29% घटी भी है। उधर विटारा, ब्रेजा, एरिटिका और अन्य बहुउपयोगी वाहनों की बिक्री 8% बढ़ी। ह्युंडई मोटर्स ने दिसंबर महीने में वाहनों की बिक्री 25% बढ़ने की जानकारी दी है। उधर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने घरेलू बाजार में वाहनों की बिक्री 14% बढ़कर 7,487 इकाई पर पहुंचने की जानकारी दी है। एमजी मोटर इंडिया ने दिसंबर महीने में वाहनों की बिक्री 33% बढ़ने की जानकारी दी है। उधर महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा बेचे गए कुल वाहनों की बिक्री दिसंबर महीने में 10.3% घटी है। हालांकि घरेलू बाजार में सवारी वाहनों की बिक्री 3% बढ़ी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के वाणिज्यिक वाहन खंड में भी बिक्री घटी है। पिछले साल दिसंबर महीने में 21,390 वाहन बिके थे घरेलू बाजार में, जबकि इस बार केवल 16,795 इकाई बिकी। उधर हिंदुजा समूह की अशोक लीलैंड ने बीते महीने में वाणिज्यिक वाहनों की कुल बिक्री वार्षिक आधार पर 14% बढ़ने की जानकारी दी है।
कृषि उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी एस्कॉट एग्री मशीनरी ने दिसंबर महीने में ट्रैक्टर की बिक्री 88% बढ़ने की जानकारी दी है। घरेलू बाजार में ट्रैक्टर की बिक्री 90% बढ़ी है, जबकि दोपहिया वाहन निर्माता यामाहा मोटर इंडिया की बिक्री दिसंबर महीने में वार्षिक आधार पर 33% 39,224 पर पहुंच गई। पिछले 6 महीने से लगातार यामाहा अपने वाहनों की बिक्री बढ़ने की सूचना दे रही है। पुनीता, आपने कहा कि ऑटो सेक्टर बहुत अच्छी खबरें लगातार दे रहा है। ये आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये इकोनॉमी की तरफ संकेत कर रहे हैं कि इकोनॉमी की परफॉर्मेंस जो है बहुत बेहतर हो रही है। एंड विद इन दिस, यदि आप ट्रैक्टर्स की बात करें तो 90% ग्रोथ ट्रैक्टर्स की बिक्री में हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो हम यहाँ पेंडेमिक की बात नहीं कर रहे, हम जो पिछले साल 2019 में सेल्स हुई थी वहां से करीब करीब 2 गुना ट्रैक्टर्स की सेल्स हुई है। तो ये बताती है कि जो रूरल सेक्टर है, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, जो गांव की इकोनॉमी है, वहां पर हम बहुत जबरदस्त हम एक ग्रोथ देख रहे हैं। फार्मर्स की इनकम जो है वो काफी ग्रो कर रही है और उसका सीधा सीधा असर हम जानते हैं कि सबसे पहले वो ट्रैक्टर्स खरीदना चाहते हैं। एंड दैट इज द मैसेज वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस नंबर्स। Well, before we have a look at the U.S. Markets, we'd like to inform our listeners that the Asian markets and the oil market was closed because of the New Year. So let's have a look at what happened in the U.S. Market now. On Wall Street, key indices ended higher yesterday as investors closed the book on a turbulent year of pandemic, recession and recovery. All three major indices gained ground, with the Dow and the S&P 500 ending 2020 at record highs. In economic data, initial jobless claims unexpectedly dropped for the second straight week, according to the Labor Department, but remained elevated as the economy stumbles through a COVID-19 resurgence. Meanwhile, nations around the world struggle to deploy vaccines to end the global health crisis. About 2.8 million Americans have been inoculated so far, falling well short of the year-end goal of 20 million. So the Dow Jones Industrial Average climbed 197 points, 0.7% to end the year at a record high of 30,606. The S&P 500 gained 24 points, 0.6% to close at an all-time high of 3,756, and the Nasdaq Composite added 18 points to 12,888. Puneet, very briefly, how do you see the vaccine rollout key to global economic development, not only as far as the U.S. is concerned, but India as well? So, Arjun, I think it is extremely important because in the U.S., we know that in the next 2-3 months, vaccination will be effective. There may be some initial hiccups, but I think it will be there. A lot of people will get vaccinated, and it will help the economies to get back on their feet. So my own sense is that within next 2 to 3 months, economies will gain post this vaccination, and even in India, because today I think the expert committee has recommended approval to the Serum Institute's vaccine. So I think all these things will become effective in next 1 or 2 months. आइए चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक फीकी रही। सोने का मूल्य 20 रुपए घटा 49,678 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी 404 रुपए घटकर 67,520 रुपए प्रति किलो रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य कमजोर हुआ, $1,895 प्रति औंस रह गया। चांदी $26.34 प्रति औंस रह गई। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत पुनीत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज। And before we close, a reminder of the headlines. Goods and services tax collection for December 2020 hit an all-time high of over 1.15 lakh crore rupees. At the stock market, Sensex rises 118 points to post another record high. Nifty adds 37 points to hit a new peak. And automaker Maruti Suzuki's domestic sales climbed 14.6% in December 2020. Hyundai Motors total sales zoomed 25%. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.